Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Preeti Laksnam program and initiation address given at the Palace Grounds in Bangalore, India by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on June 19th, 2022. Now we are observing initiation ceremony. आज अभी फाउंडेशन समारोह मना रहे हैं विगत ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಸಮಾರಂಭದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ This means connecting the souls आज आप सभी गुरु परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं आपको अपना परंपरा जुड़ संबंध करेंगे ना पाने में ब्रह्मा माता श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से हैं ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ So we have this thing, the Sangam Bhola is Krishna himself. तो हमारा यह सिद्धांत है कि सभी चीजों का सार भगवान श्री कृष्ण है ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम The Supreme Godhead is Krishna and He is the God of all powers. कृष्ण परम भगवान है तथा वे ही सभी कार्यों के कारण हैं कृष्ण चैतन्य और ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣ Initiation means to practice Bhakti Yoga and serve Krishna. दीक्षा लेने का अर्थ है भक्ति योग का अभ्यास करना और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना दीक्षा चले भक्ति योग आचरण ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು Krishna was one, then he expanded himself into various energies. भगवान एक थे परंतु बाद में उन्होंने अपने आप को भिन्न-भिन्न ऊर्जाओं में विस्तृत कर लिया भगवान ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ
Vacha Bhakti Mahamani Shakti Srimati Radharani. So the pleasure potency or Eladhi Shakti is Srimati Radharani. उनकी आनंददायिनी शक्ति अल्लाहनी शक्ति श्रीमती राधारानी है। कृष्ण का आनंद शक्ति श्रीमती राधारानी। She is the son of the devotees who have been to Dwarka and the Lakshmis of heaven. She is the source of the millions of goddess of fortune or Lakshmi in Vaikuntha. श्रीमती राधारानी गोपियों का भी स्रोत है और लाखों लाखों लक्ष्मियों का भी स्रोत है तथा द्वारका की रानियों का भी स्रोत है। श्रीमती राधारानी गोपियर ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮೂಲ Krishna is set himself Mara, Sakadeva, Narayana, Vishnu, and who's all powers. Krishna expanded himself to Balaram, Chaturoya, Narayan, and three expansions. भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बलराम जी के रूप में, चतुर्युग के रूप में, नारायण के रूप में तथा भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में विस्तृत किया। श्री कृष्ण बलराम चतुर्युग नारायण ಮತ್ತು ಇತರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ। So, the initiation means that they accept Krishna as our shelter. So, initiation means we accept that Krishna is our shelter. दीक्षा लेने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमें शरण लेनी है। दीक्षा जैसे कृष्ण ने नಮಗೆ अंतिम शरणागति ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು। Prayer initiation, we have a step called Ashraya or shelter. दीक्षा के पूर्व एक और विधि है जिसे हम आश्रय के नाम से जानते हैं। दीक्षा के ಮೊದಲು ಆಶ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ। So we don't have a chance to try out of this on their how this process works. So everyone had a chance for this 1 year to try out how this process works. आप सभी के पास एक वर्ष का समय था यह देखने और परखने के लिए ये पद्धति किस तरह कार्य करती है। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ। See, when the world, the human life, the chance, the amount, the spiritual world. In this material world, with this human life, we get a chance to get out from this material world into the spiritual world. इस भौतिक जगत में मनुष्य जन्म लेने पर हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकते हैं। ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮೀರಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ। So we are the spirit within the body, and when the spirit leaves the body is there. हम शरीर के भीतर निवास करने वाली आत्मा है और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत कहा जाता है। ನಾವು ಶರೀರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। So we take another birth depending on our consciousness.
कि हम एक अन्य जन्म लेते हैं हमारी चेतना के अनुसार ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ If we are habituated to thinking about Radha Krishna and the love of the spiritual world, If we are habituated to thinking about Radha and Krishna, then we will go to the spiritual world. यदि आप राधा और कृष्ण के संबंध में सोचने के आदी हो जाते हैं तो फिर हमें गोलोक भेज दिया जाता है राधा कृष्ण स्मरण ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೋಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹೋಗುವುದು in the field of any of the nine avatars of Radha, we go to the spiritual world, Nirvana. If we think of any of the nine avatars all around, then we go to the spiritual world to their end. यदि हम किसी भी नारायण अवतार अथवा राम के विषय में सोचते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में उनके लोक में प्रवेश पाते हैं ನಾವು ಈ ತರ ನಾರಾಯಣನ ಅಥವಾ ರಾಮನನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ Maharaj, he was ruler and emperor of the world, son of Vishnu. So, Bharat Maharaj, he was the emperor, the ruler of the whole world. भरत महाराज संपूर्ण विश्व के शासक थे भरत महाराजा विश्व राजा थे And he loved the whole kingdom and the world. He left his own kingdom and went to the forest to meditate. उन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग किया तथा वन में ध्यान करने हेतु चले गए ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ From that deer, named Noah River, to die, gave birth to a little boy. Mother deer, she leaped over a river, she died and gave birth to a fawn. तो एक मादा हिरण थी और वो जब कूदी उस समय उसका शरीर छूट गया और उसी समय उससे एक छोटे हिरण का बच्चे का जन्म हुआ ताई ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನ ಹಾರಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ಮರಿಯ ಜನನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ He could all have maybe deer, He took that baby deer and began to care for the baby. महाराज भरत ने उस हिरणी के बच्चे को उठा लिया और उसका ध्यानपूर्वक लालन पालन करने लगे महाराज भरत ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು When he died, the baby deer was licking his face. जिस समय वो शरीर छोड़ रहे थे उस समय वो हिरण का बच्चा उनके चेहरे को चाट रहा था महाराज भरत शरीर में ध्यान ಮಾಡುವಾಗ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Instead of thinking about Krishna, he thought about the deer. कृष्ण के विषय में सोचने की बजाय वो हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे कृष्ण ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ So, because of that, he took birth as a deer, but he remembered his previous birth what happened. इसके कारण उनके अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ किंतु उन्हें याद था कि वे पिछले जन्म में क्या थे ಇದರಿಂದ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಜಿಂಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು
So he thought, I made a big mistake by becoming affectionate towards the baby here. फिर उन्होंने सोचा कि उस हिरण के बच्चे के स्नेह में पड़ने के कारण मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और भारत वर्ता कोला आजीव के बड़े मोह दिता ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. So in his next birth, he took birth as Jadavarta, Brahmana, and he didn't talk to anyone. तो उनके अगले जन्म में उन्होंने जड़भरत के रूप में जन्म लिया. एक ब्राह्मण के रूप में वो किसी से भी बात नहीं करते थे. मनु जन्मದಲ್ಲಿ ಜಡಭರತನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. The thought was mentally ill, dumb. So they thought that he was mentally ill, dumb. तो वो ये सोचने लगे, वो अपने आप को एक मूर्ख और गूंगे व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करते थे. जनरल अपना बुद्धि बनाके अथवा मूर्ख है तो माता का गला लगाना. But he didn't want to make any mistake to insisting on Krishna. But he didn't want to make any mistake this time thinking about Krishna. वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे और केवल कृष्ण के बारे में ही सोचना चाहते थे. ಈ ಸತಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. Once a Buddha, Brahma started first. And the field started next. So his parents thought that okay, the only use for them is in the fields to scare away the birds. तो उनके माता पिता जड़भरत के माता पिता ने सोचा कि ये पागल है, इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, ये केवल खेतों में पक्षियों को भगाने के काम आएगा. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹಾರಿಸುವಂತ ಓಡಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Group of Catholics thought this dumb human man has sacrificed to Allah. So a gang of Nepalese thought that this is a mad person, a dumb person. So let us offer him a sacrifice to Goddess Kali. तो डाकुओं के एक दल ने उसको देखकर जड़भरत को सोचा कि ये पागल आदमी है और इसको माता काली की बलि के रूप में चढ़ा देना चाहिए. ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಇವನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾ ಕಾಳಿಗೆ ಇವನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. Then they made him dressed in his white, and they were about to chop off his head. उन्होंने जड़भरत को स्नान कराया और श्वेत वस्त्र पहनाए और फिर वो उसकी गर्दन काटने हेतु तैयार हुए. ಜಡಭರತನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. But she realized it's a great soul. He's a great soul, and to disguise himself as a dog. So Mother Kali knew that this is a great soul. This guy is a madman. This guy is a dog. माता काली समझ गए ये एक महान आत्मा है जिन्होंने अपने आप को पागल के रूप में करके छुपा के रखा है. माता काली ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ. She came alive from the Murti and cut the head of the recorder. वो अपनी मूर्ति से साक्षात बाहर प्रकट हुई और उन्होंने उन डाकुओं के सर काट दिए. मूर्ति में साक्षात काली माता बंदो और डकैत गले में चढ़ गए. Many assistants, sakis, they cut the head off of the animals. She had many assistants or sakis, and they cut the heads of all the recorders.
तो माता काली की और भी कई शक्तियां थी और उनके सहायक थे, उन्होंने उन डाकुओं के सर काट दिए। माता काली सखी को ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ ಕರೆಯಲು They're tossing the heads around in the ball. And then they were tossing the heads around like balls. उसके बाद देखा गया कि उनके सिर इधर उधर पड़े हुए हैं और ತಲೆನ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂಡ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। So Jadabala, he went back to the field. और इसके बाद जगत जो थे वो अपने खेत की तरफ वापस चले गए। ಜಡಭತ್ತ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ। Then one king, he was being carried on a palanquin. वहाँ पर देखा गया कि एक राजा जो थे वो अपनी सवारी पर आ रहे थे। मतलब ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। One of the bearers in the palanquin was limping. और उनका जो एक सहायक था वो अपने पैरों में उसको तकलीफ होने के कारण ऊपर नीचे चल रहा था। ಒಬ್ಬ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಕಾಲು ಏಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। They saw Jadabala was very strong and strong, and he was in the fields. So they said, "Come on and bear this palanquin." वहाँ पर जब देखा गया कि शंकर वहाँ के खेत में काम कर रहा था और बहुत ही सजीव भी रहा था, तो उसको बुलाया गया कि आप आइए और यहाँ पर महाराज की पालकी उठाइए। और ಜಡಭತ್ತ ನೋಡಿ ಗಟ್ಮಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। But Jadabala didn't want to commit any sin, so he was skipping over the animals. और जड़बदल ने जब नीचे देखा वो पाप नहीं करना चाहता, जहाँ पर चीजें चल रही थी उनके आगे पीछे चल रहे थे, उनको बताया नहीं कर रहे थे। ಜಡಭತ್ತ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳಿ ಇರುವೆಗಳ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ। The king said, "What are you doing, you idiot, you fatso?" और राजा ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पागल आदमी हो गया। ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ಖರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜಿಗಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। And Jadabala said, "I am not fat or I am not skinny. I am not the body. I am a spirit soul." और जड़बदल ने यीशु के बारे में कहा कि न मैं मोटा हूँ न मैं पतला हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ಜಡಭತ್ತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। The king said, "Stop, stop the palanquin, stop it, stop." और राजा ने कहा कि रुक जाओ, मेरी जो बात की आप उठा रहे हैं, रुक जाओ यहीं पर। ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। He jumped down and he paid his dandavats to Jadabala. राजा वहाँ पर अपनी पालकी से उतरकर बाहर आए और जड़बदल को अपना प्रणाम अर्पित किया। ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದು ಜಡಭತ್ತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ। He said, "You are not speaking like an ordinary person. You are speaking high philosophy." आप कोई सामान्य व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में कहा गया है। ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ। So please forgive me for my offenses. राजा जड़बदल को कहते कि आप मुझे अपने जो अपराध मैंने आपके शरण में किए उसे माफ कर दीजिए। ರಾಜ ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾನೆ। There is a whole section in the Srimad Bhagavatam about this. श्रीमद् भागवत में एक भाग में इसके बारे में संपूर्ण तरह से बताया गया है। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ। So
We've been in this material world many births. We have been in this material world for many births. हम इस दुनिया में बहुत समय से यहाँ पर आए और हमने काफी सारे जन्म लिए हैं। ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Many million of our species of life. Through 8,400,000 species of life. 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये जन्म दिया गया है। 94 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಹ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. Human birth is opportunity to get all back to God. And the human birth is the opportunity to get home back to Godhead. और हमें जो मनुष्य जीवन दिलाने के लिए उपाय है यहाँ से हम अपने घर जा सकते हैं वापस। ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬರುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. You're taking initiative. This is a step in that direction. So you are taking initiation. This is a step in that direction. आप यहाँ पर जो दीक्षा ले रहे हैं वो उसी दिशा में एक पथ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ಇಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ. You start out as a student. और आप यहाँ पर एक विद्यार्थी के तरह आ रहे हैं। ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. But eventually you have to become a master. यहाँ पर आप विद्यार्थी की तरह आ रहे हैं, इसी भाव जब आप निकलेंगे तो एक मास्टर बन जाएंगे। You have to always be a student to your guru, but you have to also be a master in your own way. आपको अपने गुरु के लिए शिष्य बने रहना चाहिए। जैसे कि आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको एक गुरु की तरह व्यवहार करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಾಗ್ತೀರಿ. So you have to learn Krishna consciousness very carefully. आपको कृष्ण भाव जो है बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए। कृष्ण भावना ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. So you study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, I want to turn my students into masters, but they don't have their degrees. मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब गुरु बने, पर ये बात है कि उनके पास डिग्री नहीं है। ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. While teaching this to you is while you devotees start your Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma and more. मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे आप जैसे पढ़ते जाएंगे तो मैं ये आपके चाहता हूँ कि आप लोग सब भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव भक्ति वेदांत के जो कोर्स है वो कृपया करके कीजिए। शिष्य तो मैं निश्चय करती भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम की परीक्षा करना पूरी उत्तीर्ण रहा। They have been doing this in Hosur. ये हॉस्टल कार्यों की तरीके जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। हॉस्टल इधर 40 किलोमीटर पहले आते हैं, अभी भारत चला इधर अध्ययन करने जा रहा है। Already somebody in their 20s is having Bhaktivedanta degree. काफी सारे भक्त हैं जो अपनी 30
वर्ष की आयु में अपनी विद्वानता की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ 30 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So leave it to later. Later you will have more service and you will have less service. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका समय कम होगा और आपके पास सेवाएं ज्यादा होंगी। ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. So if you want to make Bangalore Krishna conscious city, so each of you have to read good Shastra. अगर आप बैंगलोर में बहुत अच्छी कृष्ण भागवत शहर बनाना चाहते हो तो आपको सबको शास्त्र पढ़ने की बहुत ही जरूरत है। ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಗರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದಬೇಕು. Most devotees have not read all of the Prabhupada books. बहुत सारे डिवोटीज बहुत सारे जो भक्त हैं जो श्री प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई जिंदगी की नावें नहीं पढ़ी है। ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. But I know some who have read the books 3 times, 30 times. और मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 बार इन किताबों को पढ़ा है। ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು 30 ಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರೋ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. Several devotees have read all the books 5 times, 10 times. और काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने काफी सारे लोगों ने सब किताबों को 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ा है। ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 5 ಬಾರಿ 10 ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. Bhagavad Gita is spoken by Krishna. भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण ने ही अपने समूह से कही गई है। ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಾಣಿ. Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam is spoken about Krishna. भागवत पुराण जो है वो कृष्ण के बारे में बताया गया है। ಭಗವದ್ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವೇದಗಳು. This is our hope. It is the literary incarnation of Krishna. Read Srimad Bhagavatam and have unlimited bliss. श्रीमद् भागवत है भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान श्री कृष्ण की हमारे समूह में है तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग सब श्रीमद् भागवत भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಣಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ This is the way to protect yourself. It is vaccine against fire. ये चीज इसके द्वारा अपने आप को आया से बचा सकते हैं। ಒಂದೇ ಮಾಡಿರೋದು ಆಯನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. I don't have to say more, but we don't have time. So this is my humble request. हमारा समय के बीच में हमको मेरे से सांस में ज्यादा नहीं होगा पर मेरा ये आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप इसे श्रवण करें और पढ़ें। ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. Those who are grihasthas, make your house centered on Krishna.
और जो गृहस्थ है वो अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को सारे से आराधना करेगा अपना संसार चलाए ಗೃಹಸ್ಥರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Read Gita Bhagavatam. कृपया करके गीता और भागवत श्रवण करें. ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿ Have babies in the house. आप अपने घर में श्री गीता को रखिए. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಚನೆ ಮಾಡಿ Chant Hare Krishna Hare Rama. और घर में आप हरि नाम का संकीर्तन करें. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ Then the Yamadutas will not go to your house. ये तरह से आपके घर में जो नहीं आएंगे ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಮದೂತರು ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. And the Vishnudutas will take you back to Krishna Loka. और जो विष्णु दूत है वो आपके घर आके आपको भगवान की तरफ ले जाएंगे. ವಿಷ್ಣು ದೂತರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. We want this to be your last life in this material world. और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आखिरी जिंदगी हो इस मटेरियल वर्ल्ड में. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಜೀವನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. As Madhavanta explained, prior to initiation, there are two steps: aspiring and useless. जैसे कि माधवानंद प्रभु ने बताया है कि दीक्षा में पहले दो चरण और है जिसे हम गुरु चरण आश्रय कहते हैं और भगवद आश्रय कहते हैं. ದೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದು. Those taking aspiring, there is a checklist. Those taking shelter, there is a checklist of things that you need to learn before initiation. जो आप विषय आश्रय ले रहे हो एक बात को ध्यान रखना है कि जिससे तुम्हारे पास इसके बारे में आपको बताया जाएगा वो इसका आपको तैयार करने की दीक्षा है. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಗುರು ಜನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ದೀಕ್ಷೆ ಮುಂಚೆ. इस बताया गया है कि आप इसमें भोग लगा सकते हैं. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗನ ಅರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. That's something that you need to do. You need to eat and drink the water. तो ये बतानी पड़ेगा तो जो भी खाते हैं उसको भोग के रूप में अर्पण करेंगे उसे शाम के रूप में करेंगे. ನಾವು ಏನು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. You heard about 10 offenses. You have to chant and avoid 10 offenses. आप लोग सब दस अपना प्रकार सुना होगा आपको कोई ध्यान रखना होगा कि जो भी अपराध है उसे किसी भी तरह से नहीं करें. ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಲು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ. You have invested. You have question and answer session in the evening. अगर आपको एक सवाल हो तो आपसे पूछ सकते हैं. आज शाम हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर करेंगे. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ ಸಂಜೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.